Okay, so just look at the first question. In fibroids, which of the following is not seen? Amenorrhea, pelvic mass, menstrual abnormality, and infertility. So the right answer is amenorrhea. Amenorrhea because the feature of if the fibroids are symptomatic, usually in case of submucous fibroids, either menorrhagia is there or metrorrhagia is there. Menorrhagia, when the flow is more than 80 ml per cycle, it is due to increased surface area, है ना? And metrorrhagia is intermenstrual spotting, bleeding, which is present in ulcerated submucous polyps. Next one, which of the following procedure is done if a woman with uterine fibroids wants to keep her uterus or become pregnant? Cryotherapy, myomectomy, magnetic resonance guided focused ultrasound surgery, radiofrequency ablation. The answer is B, myomectomy, if you want to conserve the uterus. जो C and D options हैं वो newer procedures हैं, अभी भी अंडर ट्रायल हैं और उनकी जो फेलियर रेट्स हैं वो भी 20 to 30% हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, तो द ऑप्शन इज़ मायोमेक्टमी. So the other conservative treatment option is uterine artery embolization, in which uterine artery is reached through the femoral artery, then hypogastric artery, then uterine. You reach and PVC foam crystal particles, they are instilled and the uterine artery is blocked. Now the next question is, which of the following should be given to prevent the adverse effects of long-term GnRH agonist in the treatment of uterine fibroid? So the main side effect of GnRH agonist is thinning of the bones, and that too bones of the spine. So the treatment lies with supplementing with estrogen if you are giving for a long time. The next question is, what is a St. Paul's lantern? Submucous fibroid polyp, pseudocervical fibroid, wandering fibroid, cervical fibroid. The answer is cervical fibroid. सेंट पॉल्स लैंटर्न उस टिपिकल अपीयरेंस को कहते हैं जब एक बड़ा ऐसे सर्वाइकल फाइब्रॉइड के ऊपर छोटा सा यूट्रस बैठ जाता है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है. मैलिग्नेंट प्रिवलेंस ऑफ फाइब्रॉइड इज 0.5%, 1%, 5%, 10%. So it is 0.3 to 0.5% malignant prevalence of fibroid. Next question, least common complication of fibroid is menstrual disorder, malignancy, degeneration and urinary retention. So it is malignancy, which is just about maximum of 0.5%. Okay, next one, in fibroid which is not seen: amenorrhea, infertility, pelvic mass, menstrual irregularity. So the answer is amenorrhea. I think this question is discussed. What is the earliest most common presenting feature of anterior cervical fibroid? तो anterior cervical fibroid usually सबसे पहले ब्लैडर को प्रेस करता है और प्रेशर इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होती है. पोस्टीरियर सर्वाइकल फाइब्रॉइड होता है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है. अच्छा, लैटरली अगर होता है तो वीनस कंजेशन हो जाता है, तो हेमरॉइड्स हो जाते हैं, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं. ओके, next one, all are methods of managing fibroid uterus except myomectomy, radiofrequency ablation, embolization of uterine artery and laser myomectomy. So here the answer is radiofrequency ablation. वो नहीं है, बाकी myomectomy तो करते ही हैं, uterine conservation surgery है, embolization और laser myomectomy सब किया जाता है. Sucheta, 29-year-old nulliparous woman, complains of severe menorrhagia and lower abdominal pain since 3 months, and on examination there is a 14-week size uterus with fundal fibroid. What will be the treatment of choice? So here the answer will be, because she is nulliparous and the uterus has fibroid and that too fundal, it can be removed. So the answer will be myomectomy. Now the next one, drugs that reduce the size of fibroid are, so gonadotrophin releasing agonists, antagonists, then mifepristone, then ulipristal and danazol. All these drugs are given to reduce the aromatase inhibitor
Letrozole is also given to reduce the size. So all these drugs are there. So the answer here will be A, C, B. A, B, C तीनों ऑप्शन सही हैं. Decreased vascularity of fibroid is seen with, तो vascularity GnRH agonist से तो होगी कम, डायनाजोल से भी होगी, मिफेप्रिस्टन से भी होगी. डी ऑप्शन गलत है. So management option in a 26-year-old woman with 7 by 8 centimeter size fibroid. अब इसमें कुछ भी नहीं बताया कि फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक है कि नहीं है, तो फॉलोअप भी कर सकते हैं अगर एसिम्टोमेटिक है तो. ओसीपी तो एडवोकेटेड नहीं है फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का एक अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट होता है और वर्सन भी कर सकता है सिम्टम्स. मायोमेक्टमी कर सकते हैं अगर, क्योंकि काफ़ी यंग है पेशेंट. हिस्टेरेक्टमी नहीं करेंगे, तो सर्जिकल ऑप्शन में या तो मायोमेक्टमी होगी या हिस्टेरेक्टमी होगी, तो यंग है तो मायोमेक्टमी प्रेफर करेंगे. डायनाजोल तो फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए होता है, तो ये नहीं होगा. Regarding imaging of uterine fibroid, all are correct except A. Ultrasound is ideal to confirm the diagnosis. Ideal. B. Saline infusion sonography is more sensitive to detect any submucous fibroid. C. MRI is superior to USG to identify the exact location of myoma. And D. CT scanning is an alternative to MRI. तो इसमें ये बताना है गलत कौन सा है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है. अल्ट्रासाउंड सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे, और वर्लिंग दिख जाती है टिपिकल, तो डायग्नोसिस भी बन जाती है. सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी का ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अंदर 20 cc ऑफ सेलाइन डाल के फिर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, तो सबम्यूकोजल पॉलिप या कोई मुलेरियन एनोमली वो सब दिख जाती है, तो ये सही है. MRI is superior to USG to NF. Yes, exactly, it is superior, but it is more expensive, so it is not used. And the last option, CT is an alternative to MRI, is wrong because it's not comparable to MRI. MRI का अच्छा रेजोल्यूशन है, CT का कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता है फाइब्रॉइड के लिए. Concerning fibroids, the first option, use of GnRH analogs cause permanent reduction in size. No, it is not permanent. After 3 months, the size begins to grow again. Pregnancy following myomectomy is about 80%. No, it is 50 to 60%. Recurrence rate following myomectomy is about 30%. Recurrence is just 1%. Growth factors stimulate myoma to grow. Yes, so epidermal growth factor and insulin growth factor 1, these cause the myoma to grow. So D option is correct. The surgical treatment of uterine polyp includes removal by twisting, removal by morcellement, hysteroscopy, all of the above. So the answer will be all of the above. So यूट्राइन पॉलिप जनरली जो सबम्यूकस पॉलिप है, अगर वो पेडंकुलेटेड होता है तो वो एंडोमेट्रियल पॉलिप के जैसे प्रेजेंट करता है. फाइब्रॉइड पॉलिप हो सकता है या फिर प्लेसेंटल पॉलिप हो सकता है. तो जो पेडंकुलेटेड है उसको तो ट्विस्टिंग से ही रिमूव करते हैं, या फिर अगर बड़ा सा सबम्यूकस फाइब्रॉइड है तो उसका मॉर्सेलेशन कर देंगे और फिर उसको वेजाइनल रूट से ही रिमूवल करेंगे. हिस्टेरोस्कोपिकली यू कैन विजुअलाइज ऑल्सो, डायग्नोज ऑल्सो एंड ट्रीट ऑल्सो. दैट इज द एडवांटेज ऑफ हिस्टेरोस्कोपी. ऑल आर प्री रिक्विजिट्स फॉर मायोमेक्टमी एक्सेप्ट husband's semen analysis, D&C report, hysterectomy consent, none of the above. The answer will be none of the above. Semen analysis is important. Once you have ensured that there is no problem from the paternal part, then only you will proceed for myomectomy in cases of infertility. Through D&C, you have to ensure secretory phase is there. Hysterectomy consent. So sometimes the bleeding in myomectomy is so heavy that you have to do hysterectomy only. So you have to take a prior consent. So the answer is D. All are complications of fibroid in pregnancy except red degeneration, obstructed labor, PPH, placenta previa. So the answer here will be placenta previa. PPH is possible in cases of fibroid. Obstructed labor अगर cervical fibroid है या cavity को distort कर रहा है, lower segment पे है, तो obstructed labor हो सकता है.
रेड डिजेनरेशन एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में सडनली अक्यूट पेन इन द एब्डोमेन होता है, फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है और जो फाइब्रॉइड की साइज़ है वो बढ़ जाती है, फाइब्रॉइड टेंडरनेस भी आ जाती है उसमें। तो ये रेड डिजेनरेशन होता है। इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज कंजर्वेटिव, गिव IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, रेस्ट, दैट इज़ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, नो सर्जरी इज़ डन। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं रेड डिजेनरेशन पे, अच्छे से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूटराइन पॉलिप इज म्यूकस पॉलिप, फाइब्रॉइड, प्लेसेंटल पॉलिप, नन। सो इट इज़, सो द आंसर इज म्यूकस पॉलिप। इसको एंडोमेट्रियल पॉलिप भी कहते हैं। यूजुअली पोस्ट मीनोपॉजल विमेन में होते हैं। जो HRT पे हैं या टेमोक्सिफेन पे हैं उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यूजुअली सिम्टमलेस होता है, जब अल्सरेट हो जाता है तो मेट्रोरेजिया होने लगता है। तो सब म्यूकस पॉलिप। Next question, all of the following measures reduce bleeding during myomectomy except preoperative correction of anemia, pre-op oral contraceptive pills, ligation of pedicle, GnRH analogs and local injection of vasoconstrictive agents. So the answer here will be A and B. Correction of anemia has nothing to do with reduced bleeding and oral contraceptive pills are also कोई यहाँ पर इसका मेंशन नहीं होता है। ब्लीडिंग कम करने के लिए एक तो GnRH एनालॉग्स देते हैं, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया के समय ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन में रखते हैं ताकि वीनस रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाए, और टॉर्निकेट यूज़ करते हैं अलोंग द यूट्राइन वेसल्स। बोनीज मायोमेक्टमी क्लैम्प इज़ ऑल्सो यूज्ड। वेसोप्रेसिन इंजेक्शन इज़ यूज्ड टू रिड्यूस ब्लीडिंग। सो द आंसर विल बी A and B. Here I am showing you the FIGO classification of fibroid. 0 is pedunculated submucous, 1, 2, 3 and 4 are intramural, 5, 6, 7 are subserosal. Now 1 is less than 50% intramural, 2 is more than 50%, 3 is touching the endometrium and intramural, and 4 is completely intramural. Same way 5 is less than 50% subserosal, 6 is more than 50% subserosal, 7 is completely subserosal. And this is the specimen of red degeneration of the fibroid which can be asked in OSCE.